Hello, how's it going, guys? Welcome back to another video, and we're back discussing Afghanistan's historic win, firstly against England, now against Pakistan, and on the contrary, Pakistan losing to Australia and then Afghanistan. And joining me today, Ali. And before we discuss anything, make sure you guys subscribe, make sure you leave a like rating, make sure you follow all of our social media pages for the latest news about cricket and the World Cup. भाई इंडिया से तो हारना बनता था, चलो ठीक है, फेवरेट्स थे. Australia to a certain extent, maybe they're a team that can cause comebacks, but Afghanistan, like serious, इतने बुरे दिन आ गए पाकिस्तान के, इतने बुरे दिन. भाई मेरे लिए तो ऑस्ट्रेलिया से भी हारना बनता नहीं था to be honest. They're a washed up team in my opinion, especially in this World Cup the way they've been playing. मेरे लिए तो वो भी disappointing था, but after अफगानिस्तान के मैच के साथ भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया कसम से बहुत ही ज्यादा. Bro, honestly, I think I was so disappointed by that Australian performance, and especially for the start that they had. And before we discuss about Pakistan, a lot of controversy being created. Yeah, Pakistan have been given I guess, a bit of an unfair decision where they're playing their games at their weaknesses. I mean, Afghanistan against Chennai, so that Afghanistan can have a bit of an edge with the spinners that they have. They've got Australia in Bangalore, where the pitch is a completely batter's pitch, or Australian batters had a field day that day as well. And then they've got their next game again in a spin track, जहाँ पे उनके spin bowlers turn is. Do you agree कि भाई Pakistan को maybe they've got the pick of the wrong stadiums, and I think they even play a lot of games at Eden Gardens, which is another spin pitch. So Pakistan की कोई strength तो है ही नहीं. भाई देखो, first of all I think maybe there is a disadvantage, लेकिन अगर पाकिस्तानी players excuse नहीं बना रहे हैं तो I don't think the fans should either. I think it was just they just fell apart completely. Not bowling or not batting, to be honest. I don't think it's just the stadium. Of course, that might have played a role. India में उन्होंने कभी खेला नहीं है. The conditions वगैरह is new to them. लेकिन I don't think that's the main reason. I mean, भाई देखो, चलो आज की गेम की बात अगर करी जाए तो मेरे लिए तो मुझे पता था कि थोड़ा बहुत अफगानिस्तान के पास एक एज इसलिए होगा क्योंकि चेन्नई में देयर स्पिनर्स विल हैव अ फील्ड डे, एंड मुझे लगा था कि चलो मे बी पाकिस्तान विल बी एबल टू न्यूट्रलाइज इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट Afghanistan have good spinners, but again Pakistan have experienced spinners as well. Batting करी थी पहले पाकिस्तान ने 282 on the board. The fact that you can't defend 282 on a Chennai pitch, I mean Australia were all out for 199 on that pitch, so it just goes to show कि अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. And 282 was not an easy target अगर देखा जाए तो. Somewhere you have to give credit to Pakistan's batting for the way they played. Abdullah Shafiq and Babar Azam again coming in handy, so it goes to show कि भाई बैटिंग में तो कोई इशू नहीं है. Do you agree with me on that, or do you think कि भाई बैटिंग में भी कुछ improvements हो सकते हैं? एक I अगर मुझे think अगर कुछ कहना हुआ तो फिर yeah. बस मैं यही कहूंगा कि आई थिंक रन रेट उनकी थोड़ी स्लो है पाकिस्तान. आई थिंक आज के मैच में बैटिंग का इतना इशू नहीं था. यानी मामूल हक थोड़ा जल्दी आउट हो गया था, बट इट्स फाइन. ही परफॉर्म्ड हिज लास्ट मैच में, सो आई एम नॉट गोना से मच टू हिम. एक मैच अच्छा खेला, एक मैच बुरा खेल लिया. आई वी डू नीड सम कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फ्रॉम इमामुल हक. आई थिंक रिजवान आज थोड़ा जल्दी आउट हो गया, बट अगेन ही इज बीन परफॉर्मिंग थ्रू आउट कंसिस्टेंटली, तो उसको भी वी कैन से मच. बाबर परफॉर्म टुडे, ही स्कोर्ड 70. लेकिन फॉर सम रीजन आई इवन मेंशन दिस अर्लियर in one of our group chats, Pakistani players के 70 से ऊपर score for some reason जाता नहीं है. But it is what it is. Babar 70 पे out हो गया, even though I think we found one of his weaknesses, which we'll get into that later. I think middle order surprised me today, to be very honest. Saud Shakil again didn't play very well, but Shadab with the 40, and also Iftikhar with the 40. Iftikhar, I think अगर Iftikhar was the key batsman today, because अगर वो आके लास्ट में हिट ना करता तो I think पाकिस्तान ने तो भाई 280 तक भी नहीं पहुंचना था. जो उसने आखिर में आके जो मारना शुरू किया, उसी की वजह से आई थिंक इतना हाई स्कोर बना है पाकिस्तान का, वरना वो तो पहले ही फारिग थे. भाई बैटिंग, भाई पाकिस्तान की आई थिंक एशिया कप में अगर देखा जाए ना तो मैंने एक नोटिस करा था कि बैटिंग वाज एन इशू टू अ सर्टेन डिग्री, एंड बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी जा रही थी. एंड देन सडनली नाउ इज जस्ट कंप्लीटली ऑपोजिट वेयर द बॉलिंग इज सो बैड. चलो लास्ट गेम शाहीन अफरीदी टुक 5 विकेट्स, थोड़े बहुत टेल एंडर्स को पिकअप किया, एक दो की विकेट्स एज वेल, सो क्रेडिट वेयर ही डिजर्व्स इट आफ्टर रवि शास्त्रीज फेमस कमेंट्स ऑफ कि भाई क्यों इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो इसको, ये तो एक एवरेज बॉलर है. आई थिंक भाई it's embarrassing यार when you see the likes of Shaheen, Rauf, Shadab, Iftikhar. चलो उसामा मीर को तो मैं नहीं इतना बोलूंगा इसमें क्योंकि he's a new guy and inexperienced, अभी अभी टीम में आया है तो आप उसको इतना ब्लेम नहीं कर सकते. हसन अली टू अ सर्टेन डिग्री, क्योंकि मैं हसन अली जनरली मुझे जीरो एक्सपेक्टेशंस थी उससे, एंड आई थिंक उसने काफी अच्छी बॉलिंग कराई है थ्रू आउट. आज भी इकोनॉमी सबसे बेस्ट उसी की थी
चलो अगर वो विकेट्स नहीं ले रहा, एटलीस्ट वो रन्स नहीं दे रहा. 4.4 इन टुडेस फॉर्मेट इन ओडीआई इज प्रीटी डिसेंट. बट समवेयर शाहीन एंड शादाब, जो दो इनके की बॉलर्स हैं, एंड दे आर नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. कोई एग्जाम्पल नहीं सेट हो रहा भाई. शादाब 6.12 की इकोनॉमी, 6.8 उसामा मीर, चलो ठीक है, एंड रऊफ एंड शाहीन बोथ 6+ की इकोनॉमी. दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल. आई मीन कर क्या रहे हैं ये लोग, करना क्या चाहते हैं? आर दे ट्राइंग टू ब्रेक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द ऑपोजिट एंड कि भाई चलो मोस्ट लॉसेस इन अ वर्ल्ड कप या लास्ट टीम टू क्वालिफाई, व्हाटएवर, आई डोंट नो. भाई मुझे तो ऐसे लग रहा है कि नसीम शाह के जाने के बाद द बॉलिंग लाइनअप जस्ट कम्प्लीटली फेल अपार्ट, के मतलब भाई क्या आप लोग इतने डिपेंडेंट थे नसीम शाह पे? आई फील लाइक दीज बॉलर्स एक्चुअली, द वे पाकिस्तान ने इनको तीन बॉलर्स को बनाया था कि दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है? एक तो शाहीन हो गया, हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह हो गया, तो यू सी वन गॉट आउट, वन इंजर्ड हो गया, ऑब्वियसली इज नॉट प्लेइंग, एंड वन इजंट परफॉर्मिंग, शाहीन अफरीदी हु द मेन बॉलर्स। तो हारिस रऊफ आल्सो फेल अपार्ट। भाई हारिस रऊफ तो क्या कर रहा है, उसकी लाइन ऑफ लेंथ क्या है, वो बॉल क्या करना चाह रहा है, कोई सम भाई जहाँ मार खा रहा है वहीं पे बॉल कर रहा है। एंड आई सॉ सम ऑफ दीस पीपल से कि ऑनेस्टली इज नॉट एन ओडीआई बॉलर, एंड आई थिंक दैट्स ट्रू। ओडीआई का बॉलर मुझे नहीं लगता, बिकॉज T20 में क्या आपको चाहिए, दो तीन किस्म की बॉलिंग करें, ज्यादा वेरिएशन नहीं, वही डालते रहो डाल। लेकिन भाई ओडीआई में यू कैन डू दैट। वो वही बॉलिंग डाल रहा है, उसको मार भी पड़ी, उसने कहा नहीं भाई मुझे ऑफ स्टंप पे मारना है, मुझे ऑफ स्टंप पे मारना है, लेकिन पता नहीं उसको बिल्कुल कंप्लीट। और शाहीन ने लास्ट मैच में अच्छा खेला, 5 विकेट्स लिया लेकिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इस मैच में अगेन कंप्लीटली फेल अपार्ट, couldn't do anything. So yeah man, I'm very disappointed. Osama Mir को भी we can't cut him slack, because the whole Pakistan community, all the fans, sorry, Pakistan cricket community, everyone was like, भाई शादाब को बिठाओ और उसामा मीर को लाओ। शादाब जैसे बड़े प्लेयर को बिठा के हम उसामा मीर को चांस दिया, ये बंदा आके क्या कर रहा है, फुल टॉस। भाई तेरा दिमाग खराब है, मैं क्या बोलूं भाई, जितनी कितनी तमीज करूं मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं दो बार पॉडकास्ट में आया हूं तेरे, वो तमीज से बात की, अब तो दिमाग खराब हो गया भाई। फुल टॉस से कर रहा है। उसने एक दो बॉल शेन वॉटसन कह रहा हूँ भाई, वार्नर को की, और वो अच्छी स्पिन हुई भाई। अगर वो नॉर्मल लेंथ की बॉल करे तो अच्छी स्पिन हो रही, वार्नर से नहीं खेला जा रहा था वो बॉल, फिर उसने फुल टॉस से डालना शुरू कर दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी और अभी भी। तो उसामा मीर से ना बॉल हो रही है, उससे बेहतर था भाई बंदा नमाज को खिला ले। नमाज फिर भी एटलीस्ट बैटिंग में 20 रन कर देगा और बॉलिंग में रन नहीं देगा, क्योंकि उसामा मीर को उन्होंने ये कहा था कि ही इज गोना गेट हिट, ही इज एटलीस्ट गोना टेक विकेट्स, ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर। भाई वो विकेट भी नहीं ले रहा है, वो कर क्या रहा है टीम में? तो अगेन आई थिंक शदाब डिडंट परफॉर्म वेल टुडे इधर। बैटिंग में उसने अच्छा परफॉर्म किया, ही शोइंग दैट मे बी ही इज अ गुड ऑलराउंडर, ही जस्ट वाजंट इन फॉर्म। बट अगेन वी नीड दैट बॉलिंग बैक फ्रॉम शदाब, हिज लाइन ऑफ लेंथ इज आल्सो ऑल मेस्ड अप। Again, Haris Rauf, very disappointing. Shane Afridi, very disappointing. Hassan Ali, फिर भी, whatever. He's doing the best he can, I guess. He's also not very fit, I guess. थोड़ा सा, और he's also, I think, battled some injuries and stuff. So I think we gotta cut Hassan Ali some slack. Like, Haris and Shane, just need to do better. I agree. I think मेरे सबसे बड़ी कंप्लेन होगी तो शादाबी होगी मेरे लिए, because honestly this guy, it's his expertise भाई. ये सारी पिचेस इसकी एक्सपर्टीज है. एंड आप कोई भी टीम से बॉलर उठा लो, जैम्पा उठा लो, चलो इंडियन बॉलर्स को आप इस कॉन्वर्सेशन से बाहर रख दो, उनको तो कंडीशंस ऑब्वियसली उनको पसंद आएंगी, बट आप रचिन रविंद्रा को देख लो. दिस यंग गाय who's just come in, he's suddenly performing for New Zealand. Zampa's been doing well for New Zealand, for Australia as well. You've got Welelage as well, who's pretty much done well. वो भी एक यंगस्टर है who hasn't had a lot of experience, और वो भी आगे कर रहा है. एंड ये जो पाकिस्तान का एक एक्सक्यूज है ना कि भाई वी नॉट प्लेइंग एट फेवरेबल पिचेस, या हम लोग के पास इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस, ये भाई ऐसे टीमें नहीं बनती. आप वर्ल्ड कप ऐसे ही नहीं जीतते हो. वर्ल्ड कप जो आप जीतते हो तो आप कंडीशन से नहीं देख के नहीं जीतते हो, आप अपनी टीम की क्वालिटी देखते हो. आप ये देखते हो कि भाई कौन सा प्लेयर किस दिन कौन सा क्या चीज कर सकता है, और फिर आप उस हिसाब से टीम बनाते हो. तो डोंट कम हियर एंड से कि भाई दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, या कंडीशंस बहुत खराब है, या हाँ वो तो बहुत बेहुदा बात की है भाई, दिल दिल पाकिस्तान वाली। मतलब भाई आप लोग जाहिल नहीं हो, आप लोग वर्ल्ड क्लास टीम हो, यू आर नंबर वन ओडीआई फॉर अ रीजन। ये क्या बात हुई कि भाई हमने इंडिया में नहीं खेला या दिल दिल पाकिस्तान नहीं बढ़ा रहे? भाई दैट डजंट मैटर। यू डोंट थिंक Virat Kohli can just go into Australia? Of course he's played there, but you don't think he's gonna go in there and just destroy Australia, even though like there's Australian fans. I don't think I don't think they care. I'm just trying to control my language a little bit. ज़्यादा नहीं. hyper नहीं हो. I agree. I mean भाई, no one knows it better than a Pakistani fan who has probably seen Kohli's 82 against Pakistan in Australia. So well, I'm gonna mention this everybody. भाई बस खत्म, मैं जा रहा हूँ, कैंसिल कर दे, पॉड कट कर। नहीं यार, सीरियसली यार, मतलब यहाँ पे बैठ के हम लोग कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं सकते, और हम लोग कह ही नहीं सकते कि ये एरिया इंप्रूव करो, बिकॉज रियलिस्टिकली भाई पाकिस्तान के पास बचा क्या है इस वर्ल्ड कप में? डू यू थिंक दे डू हैव अ चांस टू क्वालिफाई ये स्टिल? बिकॉज देखा भाई जाए तो भाई पाकिस्तान, दे प्लेड टू स्ट्रॉन्ग टीम सो फार, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया प्रॉब्ली. अभी साउथ अफ्रीका है नेक्स्ट गेम, जो
ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने 2 बार ऑलमोस्ट 400 प्लस स्कोर बना चुके हैं। इंग्लैंड को इन्होंने धो के आए अभी वेंकटेश स्टेडियम में, तो इमेजिन व्हाट दे विल डू एट चेन्नई अगेन। भाई सबसे पहले तो पाकिस्तान एंड वर्ल्ड कप का ऐसा रिश्ता है कि ऑलवेज कम्स डाउन टू ये होगा तो पाकिस्तान अंदर आएगा, और ये इस बंदे को हारना है, और उसने उससे हारना है, और उसने उससे जीतना है, और पाकिस्तान ने इतने जीतने हैं। भाई इतना नहीं होना चाहिए भाई। देखो इंडिया न्यूजीलैंड कितने कंफर्टेबल होके बैठे हुए हैं ऑन द टॉप जस्ट चिलिंग, यू नो। बट यू नो पाकिस्तान डज इफ दे वांट टू गेट टू द सेमीज नीड टू विन 4 in a row, so they're competing with Australia right now to make it to the semis. So they have to win 4 matches. अब those 4 matches are against South Africa. ठीक है, साउथ अफ्रीका ने तो भाई दुआ ही कर सकते हैं हम लोग, against England. And England are very out of form, but I think the Pakistan I saw today and the Pakistan I saw against Australia, England's going to destroy them. ठीक है, and then we have a match against Bangladesh, and then we have a match against New Zealand. By New Zealand से भी भूल जाओ, अगर if you want to perform like this, भूल जाओ. You know, I think the Pakistan I saw today and the Pakistan I saw against Australia, but especially today, I mean, overall ना बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। स्पेशली फील्डिंग में तो इतना मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई, इतनी मिस फील्ड, इतने ओवर थ्रोज के भाई बंदा क्या भाई भाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल माय emotions right now, but नहीं, the it's the right Pakistan that nah yeah the Pakistan that played today, they don't, not only do they not deserve to win the World Cup, they don't deserve to play the World Cup. I think इनका भाई क्वालिफायर मैच कराओ अगली बार से जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज वाला के साथ कि क्या इनको खेलना चाहिए वर्ल्ड कप के नहीं खेलना चाहिए भाई। मतलब इट्स वेरी embarrassing stuff from today I from think Pakistan I today. think generally a lot of fans are frustrated, and I think अगर मैं एज अ क्रिकेट पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं भी यही कहूंगा कि यार एवरी गेम पाकिस्तान हैव एक ऐसा मोमेंट लगता है कि चलो ये पाकिस्तान के बैग में, और वो बैग में लिटरली वो होता नहीं जैसे आपने किताब रखते रखते वो बैग गिर गई आपकी किताब, एंड इट जस्ट काइंड ऑफ जस्ट स्टेज लाइक दैट। वो इट्स लाइक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतनी जबरदस्त स्टार्ट थी बैटिंग की। एट वन पॉइंट दे नीडेड लाइक 220 ऑफ 200। मैंने कहा भाई ये तो सिंगल डबल लेते रहे जीत जाएंगे गेम, 6.5 की रन रिक्वायर्ड रन रेट है, जीत जाएंगे, खत्म। एंड सडनली जस्ट वेंट डाउन है। आज बैटिंग कर रहे थे, चलो थोड़ा बहुत स्टार्ट में स्ट्रगल किया, फिर एक पिकअप किया, 287 स्कोर किया। मैंने कहा चलो सही है, 287 रिस्पेक्टेबल टोटल इन चेन्नई, एंड एक की भी बॉलिंग खराब नहीं है तो दे गेट इट डन। एंड आई थिंक इट वाज लाइक 98 नीडेड ऑफ 75। आई वाज लाइक ठीक है, विकेट्स अगर ये पिक कर लें एक दो तो कर लेंगे, बट अफगानिस्तान टॉप ऑर्डर, क्रेडिट टू अफगानिस्तान टॉप ऑर्डर भाई, क्या जबरदस्त खेला है। एंड द वे दे प्लेड स्पिन, truly mesmerizing to see, and now they've just put themselves in such a good spot where they're also in contention for qualification। 2-3 गेम्स अगर वो जीत गया तो वो भी आ सकते हैं। So as a neutral I would say कि भाई पाकिस्तान really need to step up their game, and coming into this World Cup भाई ज्यादा लोगों ने उनको ज्यादा hopes दी नहीं थी, maybe they knew a little bit better than me, but I said Pakistan should be there in the top 4 because it's conditions that they're familiar with, so it's very disappointing to see the way they're playing, and it's very frustrating। आप हर गेम देखते रहो तो इतना एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं और करते कुछ है नहीं, और इधर उधर छोटी मोटी में जैसे लगता है वो आए ही नहीं है वर्ल्ड कप खेलने, ऐसी वार्म अप गेम्स खेलने आए हैं, बस ऐसी वेकेशन पे आए हैं और एक्सक्यूजेस बना के भी भाई चले I don't जाएंगे। know if you even I don't know if you were able to watch today's game, लेकिन मतलब credit अफगानी मतलब बैट्समैन इतना उन्होंने प्रेशर डाला पाकिस्तानी बॉलिंग पे, मतलब it was almost like they have no respect for पाकिस्तानी bowlers, all their fielders। मतलब भाई हाथों से 3 रन भागे भाई वो, मतलब उन्होंने आई थिंक सारा स्कोर सिंगल डबल करके मारा, मतलब भाग भाग के हाथों से 3-3 रन भाग रहे हैं, because they know Pakistani fielders when they see you running for a second, they're going to overthrow, they're going to miss something, कुछ तो भाई pressure में आके करेंगे खराब। So it was literally almost like they had no respect for Pakistani bowling or fielding, and rightfully so, to be very honest. I think agreed. I think there's nothing wrong with the way Afghanistan played today and just showed their class as well. और कहीं ना कहीं we all know the rivalry that's been happening between Afghanistan and Pakistani players, जो fights देखी हैं और सब, so it's nice to see them win as well। This one hurts more Pakistan than the against, India match, bro. This one hurts more than the India match, I I swear think to God. because there was a lot more riding on this match, there was a lot more chances of Pakistan winning this match than against India, I guess। वही एक मैं कहूँगा। Yeah. Um, against South Africa, do you think Pakistan has a chance, realistically speaking? आई थिंक द पाकिस्तान द प्ले टुडे, एक तो वो 100 पे आउट हो जाएंगे और 2 ओवरों में खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है ना। द पाकिस्तान दैट आई सॉ टुडे, क्योंकि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान को अपनी फील्ड टाइट रखनी है, ब्रो दे आर ऑल यंगस्टर्स। आई मीन आई थिंक पाकिस्तान इज लाइक वन ऑफ द यंगेस्ट टीम्स दे आर प्लेइंग राइट नाउ, ठीक है। मतलब देयर कैप्टन इज लाइक 29 ब्रो, लाइक look at क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, look at these teams, they're इतना experienced but they're like a little bit older, you know, they're veterans, like maybe they're playing their last World Cup। पाकिस्तान की बेसिकली पूरी टीम पे पूरा वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप खेली है भाई। थोड़ा सा यू नो you're young, you need to like भाई थोड़ा बाउंड्री में थोड़ा सा भाई जान लगाओ, क्या कर रहे हो, मिस फील्ड इतना कर रहे हो, प्रेशर में आ रहे हो। आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन इन द फील्ड, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर बॉलिंग नहीं हो रही, बैटिंग नहीं हो रही भाई, फील्ड में तो ना हगो यार।
आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, मतलब क्या करना क्या चाहते हैं। बॉलिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है भाई। मतलब आई थिंक इफ दे वांट टू बी साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू स्टार्ट जिस तरह उन्होंने इंडिया के खिलाफ स्टार्ट किया था। You know, Imam and Abdullah Shafiq need to play amazing. Babar needs to step up in that game, man. I know he played well today. अगर वो भाई वन डाउन, भाई ओपनिंग मेहनत बिल्कुल जाया हो जाती है अगर वन डाउन आके परफॉर्म ना करे। आज जाके वन डाउन को देखो, he only scored 70 something, but he was way more significant to the game than the opening batsmen in my opinion. क्योंकि भाई ओपनर्स आके दोनों 100 भी करें, अगर वन डाउन just comes and chokes, the middle order को प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो I think Babar just doesn't shouldn't get out early. He needs to perform well, and I feel like उसका थोड़ा सा हमें उसका क्रिप्टोनाइट नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप में, which is spinning. अभी भी हम्म। स्पिन से आउट हुआ, और आई थिंक उसका क्रिप्टोनाइट सारे प्लेयर्स को नजर आ रहा है। तो जब भी बाबर उसको स्पिन करा तो मतलब इसका ये। तो एग्जैक्टली। आई थिंक पाकिस्तान needs to be super tight, ball well, और उसामा मीर आई डोंट नो उसको बिठाना चाहिए कि खिलाना चाहिए, honestly don't know, but भाई yeah man, I बहुत think टफ there होने needs to be वाला some serious changes. बहुत हाँ, टफ होने वाला पाकिस्तान के लिए, अगर मैं रियलिस्टिकली बोलूँ तो भाई। बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर पाकिस्तान बॉलिंग पहले करती है तो साउथ अफ्रीका विल ट्राई एंड गेट टू अ 350 स्कोर, 300 स्कोर, जो कि कम्प्लीटली पॉसिबल है साउथ अफ्रीका के लिए। ऑन देयर गुड डे दे हैव इनक्रेडिबल बैटिंग पावर। डे कॉक अच्छा खेल रहा है। देव गॉट वैन प्लेइंग वेल एज वेल। क्लासन लास्ट गेम सेंचुरी, इतनी खराब कंडीशंस में मुंबई में, आई गेस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी। एंड देन उसके बाद वो भी Aiden Markram as well. He's also got a century. So Pakistan will be really worried about that. और फिर अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो भाई अगेन साउथ अफ्रीका के बैटिंग पावर इतनी अच्छी है कि whatever स्कोर पाकिस्तान पुट अप विल बी लेस, क्योंकि पाकिस्तान की एक नेचुरली रन रेट जो है बहुत स्लो है इस वर्ल्ड कप में। भाई 4-5 की रन रेट आप नहीं अफोर्ड कर सकते इस रन रेट इस वर्ल्ड कप में। आप इंडिया ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, कोई भी ले लो, पावर प्ले में दे गो बाय 7-6, मिनिमम 550, 530 होता ही है। क्योंकि आपको चाहिए वो एक्स्ट्रा रन। जब फील्डर्स अंदर होते हैं फील्ड के 30 यार्ड सर्कल के, दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्कोर दोज रन। और फिर वो मिडिल ऑर्डर में जो थोड़ी स्लो डाउन होती है वो भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट वेयर 5 तक रहती है, फिर वो वापस 6 पे जाती है एंड में। आई थिंक आई वाज रीडिंग अ स्टैट टुडे व्हिच सेड पाकिस्तान जस्ट स्कोर्ड ए 6 इन द पावर प्ले आफ्टर 1200 बॉल्स टुडे। सो जस्ट इमेजिन, गोज टू शो कि भाई क्या मेंटालिटी से ये लोग खेल रहे हैं गेम्स, वेयर भाई देखो, दे आर मतलब फाइन विद फखर सिंगल्स फखर एंड आता था, डबल्स। फखर आता था वो आके फिर भी मारता था, but right now he's not in form, so we have Imam ul Haq, who's primarily a test batsman. In my opinion, he's not doesn't play very fast. उस दिन मतलब against India he was scoring some boundaries, जो के मारा था, and Abdullah Shafiq started a little slow, but I think against South Africa Abdullah Shafiq needs to be the hitter. Don't play risky or stupid shots, don't even hit for sixes in my opinion, go for fours, ठीक है, because opening batsmen we can't afford to lose them early. So I think they need to, like, जल्दी जल्दी तेज तेज खेलें, not play slowly, टुक टुक ना खेलें. I think they're too scared to lose the wickets because our opening they usually get out before 100, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं अपना ओपनिंग थोड़ा सा आगे तक जा रहा है, थोड़ा लास्ट कर रहा है more, but that's because they're playing slower. So yeah, you're right man, we need to score some more runs in the power play. Completely agreed भाई। बहुत टफ मैच होने वाला है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। चांसेस आर अगेंस्ट पाकिस्तान, but this is the perfect time for them to say कि भाई our backs are against the wall, let's prove the world wrong and maybe do something that's never been done in World Cup history before. So yeah, good luck to Pakistan, I guess. Ali, thank you very much for being on the video. Guys, if you guys enjoyed ये जो extra content आप लोग को मिल रहा है, सब behind the kind of scenes content जो कि podcast में नहीं है, and we'll try and do some more podcasts with other people, try and get some Australian fans and British fans, English fans as well on the podcast sometime soon. But yeah, thank you guys very much for watching. Hope you guys like it. Make sure you subscribe, make sure you leave a like rating, and we'll see you guys next time. Until then, stay safe.